Hello, good morning, children. I hope that all of you are doing very well. Today I am going to tell you about your political science project work, how to do, what to do accordingly. I have made some lists here. Topics are given: political science project work, Indian Constitution, it is for class 11th, election presentation, legislature, judiciary, local government, rights, development, justice, freedom. And I have allotted you these projects. Right? Otherwise, you will get confused what to do, what to do. It may happen that there may be any type of confusions. To avoid all type of confusions, I have allotted you the different topics like roll numbers 1, 2, 3. They have these both topics, Indian Constitution and elections representation. Right? You have this option also. All these three students can take this Indian Constitution and election representation, but mind that you have to prepare one topic only. इन दोनों में से आप तीनों बच्चे कोई भी एक प्रोजेक्ट ले सकते हो एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर. देन लेजिस्लेचर रोल नंबर 4, 5, 6, जुडिशरी 7, 8, 9 and local government 10, 11, 12 roll number and rights 13, 14, 15 and development 16, 17, 18, justice 19, 20, 21, freedom 22, 23, 24. In this way these are the roll numbers, but then also if some student face any type of problem regarding their topic, then you may just seek my help. Accordingly I will guide you. So hopefully dear student you have understood these are the topic and allotment of the topics. You may take its screenshot. I will send on your app also accordingly. Then how to prepare this, and here you have to write the methodology, right? Page number page number 1, that you have to make in this way. Title of the project, name, class, section, subject, school roll number, CBSE roll number, school address, session. For CBSE roll number you may time being leave this place blank. Afterward you will write when you will get this. And then the next page number 2 is there. You have to write here the objective of your project. For what is the aim that you are making this project for. Make this you have to give your valuable thoughts regards that what you usually learn from the these topics, and accordingly you have to give the objects of the topic. You have to outline the purpose of doing the project in this topic in points. Maximum 3 points you may write. 1 to 3 points you have to write. Then you have to take page number 3, that is methodology. Mean to say what method you have adopted, you will adopt. That would be the third page. Visit to museum, archives, historical sites, primary source, original documents such as diaries, speeches, manuscripts, letters, interviews, records, eyewitness accounts, autobiographies, secondary sources, bibliographies, reference books including dictionaries, encyclopedias and atlas, articles from magazine, journals and newspapers, history books and other popular or scholarly books, textbooks, etc. Then you may mention the internet facility and their sites, what you have seen to make your project more objectable as well as more fruitful and more knowledgeable, so that you can attain knowledge and accordingly it would be fruitful for you, so that you may express these things. Then very important, data collection and validation. I mean to say whatsoever data you have taken here, different like political parties, elections, that you have taken, that you have to write here, mention here from where you have taken that data, what is the source, date wise. If you are collecting picture, that you have to paste here.
And then page number 5 would be the index page. In that page you have 3 columns: serial number, subtopics and page number. Yes students, you have to mind here that whatsoever index you page you will make here, that page you have to make in the end, but put it on the page number 5, because here you have to write the page number of your project file, so that you will mention in the end. वट आर द पेज नंबर. हो सकता है किसी टॉपिक में 3 पेज है, किसी में 2 है, किसी में 1 है, तो अकॉर्डिंगली यू विल मार्क दैम पेज नंबर वाइज. यस स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट दैट इज़ द पेज नंबर 7. हियर यू हैव टू राइट द बिब्लोग्राफी. टेक केयर बेटा, इसमें ऐसे नहीं कुछ भी आप लिख दो बिब्लोग्राफी में कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ऑनलाइन सोर्सेज, इंटरव्यूज़, स्पीच, प्रेजेंटेशन एंड कॉन्फ्रेंसेज, सेशंस, बुक्स मैंने ये कंसल्ट की है, जो एक्चुअली आपने कंसल्ट की है, तो दैट यू हैव टू राइट. इट मे हैपन दैट एक्सटर्नल एग्जामिनर और योर इंटरनल एग्जामिनर ड्यूरिंग योर वाइवा मे आस्क द नेम ऑफ द बुक राइटर. whatsoever you are writing here, you must know all about the book. That you will know only if you have really done that work. अगर आप just merely for the sake of increasing the number and bulk of your project, that won't be sufficient. Then you have to, this is the page number acknowledgement. In this way it is only for the reference I have taken this acknowledgement. In this way you may some decorative purpose, that is creative, not के ready-made sticker लगे लिए, ये ले लिया, वो ले लिया, उसके according you will prepare. That is not acceptable. Like this is the front page I have copied from your previous students, right? So whatsoever is there, you have to see that project. लाइक प्रोजेक्ट फाइल लिखा हुआ है, देखो अलग से क्लॉज पेपर लेके इसमें एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ये तो 12th क्लास का इंडिया है, इस टाइप से ये सिंबॉलिक है कि दिस प्रोजेक्ट इज़ रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टीज़. तो इन दिस वे यू हैव टू टेक दिस इज़ द डेमोस्ट्रेशन ऑफ योर इंट्रोडक्शन पेज. प्रोजेक्ट के बारे में इससे पहले आपका जो है वो आपका इंट्रोडक्टरी पेज लगेगा, जिसमें आप नाम, क्लास, रोल नंबर, ऑल दीज थिंग्स यू विल राइट. तो इन दिस वे ऑल दिस अबाउट योर प्रोजेक्ट. एंड वंस अगेन आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस कि यू डोंट प्लीज़ irrelevant things you are not supposed to write here, because based upon your this project you will get your whole marks. Viva would be conducted. Take care of this. And one thing more, on your first page of your introduction, on this here you may paste your picture also. You have to paste your pic. Okay, you have to paste your pic regarding that. This is the for pic. यहाँ आप अपनी पर्सनल पिक लगा सकते हो. हियर यू मे पेस्ट द पिक ऑफ योर टीचर ऑल्सो अकॉर्डिंगली, राइट. यहाँ स्टूडेंट लिख देते हैं, यहाँ टीचर लिख देते हैं, बट दैट इज़ नॉट नेसेसरी. टीचर्स पिक इज़ नॉट नेसेसरी. तो इन दिस वे यू हैव टू प्रिपेयर दिस प्रोजेक्ट अकॉर्डिंगली. राइट, हियर यू मे टेक पिक. एंड फिर भी आपको इन टॉपिक्स में क्या करना है, कैसे करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पेज लेना है. जैसे मैंने आपको बताया उस इंट्रोडक्शन पेज में, जैसे फॉर एग्जांपल आप यू आर टेकिंग पेज ऑफ इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन में आप बुक्स मैगजीन से कुछ ले रहे हो, उसमें सबसे पहले इलेक्शन का इंट्रोडक्शन दोगे. ठीक है, इलेक्शन क्या होते हैं, उसके टाइप्स होते हैं. देन यू मे राइट इंडियन इलेक्शन सिस्टम. फिर इंडियन इलेक्शन सिस्टम यू मे कंपेयर विद द अदर कंट्रीज़ अकॉर्डिंग टू योर बुक वर्ड्स एवर गिवन देयर. राइट, उनके अकॉर्डिंग उनको कंपेयर कर लोगे कौन किसके साथ है. न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज अगर आपने कुछ यूज़ किए हैं उनका नाम मेंशन कर देना. एंड इंटरव्यूज़, यू मे टेक इंटरव्यू रिगार्डिंग योर टॉपिक फॉर द डिफरेंट योर टीचर्स, नेबरहुड टीचर्स. राइट, आज और कहीं तो जा नहीं सकते आपने नेबरहुड. देयर आर सम कैटेगरीज रिगार्डिंग योर educational institutions, and you may include some speeches given on the same topic by some
important person or personalities. You have to make some presentation, and you may add some conferences, and regarding their online resources whatsoever they have done, accordingly you may mention these things. And dear student, while making acknowledgement, you have to acknowledge that what you have done, what you are trying to do, what you will listen, and where the things you have collected, how did you how will you manage regarding your project, राइट। जैसे आप पहले थोड़ी सी प्लानिंग रखोगे कि मैं अपने प्रोजेक्ट में पिक्चर्स इस टाइप्स की लगाऊंगा, इस टाइप की मैं अपने सोर्सेज लूँगा, दिस इज़ इन माई प्लानिंग। द प्रोजेक्ट विल नॉट बी रेडी विद इन 1 day 2 day 3 days, approximately it will take 15 days. The first 3 days you have to discuss with yourself. It means you have to make your self evaluation, okay, what I am going to do, how I will do it, right? When you think about this, and there would be different type of ideas in your mind, right? Like जो भी आपको ideas आ रहे हैं, there would be doubt, तो you are free to talk to me, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आप मेरे साथ बात कर सकते हो कि मैम इस टाइप से आई वॉन्ट टू प्रिपेयर दिस, हाउ कैन आई मेक इट, आई एम गोइंग टू मेक इट मोर इफेक्टिव बाई दीज सोर्सेज, दीज मीन्स, एंड इफ़ आई वुड बी एबल टू डू समथिंग, आई वुड हैप्पीली डू इट, एंड इट इज़ वेरी गुड credit for me that when you will ask question regarding your project and give me your valuable suggestions कि ma'am I am going to do this thing in my project. Dear students, please take care. Before doing, you have to make one rough outline on your one page. There you will settle all the thing कि अगर ये आ गया तो मैं I will attempt in this way, I will attempt in this way, this diagram. हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग पिक्चर्स, ट्राई टू कलेक्ट योर ओरिजिनल न्यूज़पेपर कटिंग्स, राइट, एंड वेयर एवर सम सिम्बल्स, कुछ इस टाइप की पिक्चर्स हैं दैट यू कैन ड्रॉ, तो प्लीज़ ट्राई टू ड्रॉ बिकॉज ओरिजिनलिटी विल ऑल्सो अप्रिशिएट, आई appreciate the originality of the project accordingly. Okay student, hopefully you have understood this thing, but then also I request again and again, suggest you don't get confused, try to make your project more and more effective, because this time you have much time, you are at home only and you may able to do all these things perfectly. Thank you students, bye, take care.